press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णकांत और मैं आज आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा व्यूज। दोस्तों, आप लोग का काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। काफ़ी लोग मुझे फेसबुक पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आके मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं उनसे काफ़ी कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे वहाँ पे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, है ना। और वहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और होप आप लोग का इसी तरह से सपोर्ट मुझे मिलता रहे, है ना, आगे भी। तो आज मैं जिस चीज़ का रिएक्शन करने वाला हूँ वो वीडियो है द इन्फोग्राफिक शो, ये चैनल है उनकी ओर से है ना। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा, वीडियो का नाम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2017 मिलिट्री स्लैश आर्मी कंपैरिजन। ठीक है, तो मिलिट्री कंपैरिजन का वीडियो है ये और होप इस वीडियो में उस तरह का नहीं है जिस तरह का सोच रहे हैं कि एक दूसरे को डिग्रेड किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो आज मैं इसका रिएक्शन देने वाला हूँ। और एक बात मैं आप लोग को ये बता दूँ कि जो लोग यहाँ पे आप ये थंबनेल देख के इस तरह का माइंडसेट बना के आए हैं कि यहाँ पे इंसल्ट हो रही है किसी चीज़ की, किसी का कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्ट रिव्यू है, ठीक है, जो है वो है। और अगर इस तरह का माइंडसेट अगर आप रख के आए हैं अपना कि बाद में कमेंट में ये सब चीज़ बोलेंगे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। तो आप प्लीज़ यहाँ से ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर एंड कट बात बोलूँगा मैं, है ना। तो देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो हेयर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट। Two of the largest militaries in the world in terms of personnel are India and Pakistan, with both militaries having experienced rapid modernization in recent times. The two countries are located on the Indian subcontinent, separated by an international border that winds through the enchanting Himalayan mountains, cuts through arid deserts, urban centers, and stretches on to the coast where it meets the Indian Ocean. This divide is heavily guarded and notoriously dangerous. Outside of the North-South Korean demilitarized zone, there is perhaps no other more volatile border on the planet. With this in mind, let us see how these two countries match up in this episode of the infographic show, India versus Pakistan. Don't forget to subscribe and click the bell button so that you can be part of our notification squad. Much of the Indian-Pakistan border remains lit at night by about 150,000 floodlights, and according to NASA, it's one of the few international boundaries that can be seen from space. The 1,800-mile international border of India and Pakistan hedges one of the largest countries in the world, India. The country is 1.27 million square miles, making it the 7th biggest nation in terms of landmass. Pakistan is small in comparison, with a 307,374 square mile landmass. India is also much bigger in terms of population, with 1.311 billion people, making it the second most populated country next to China. Pakistan's population is 197 million. The number of people each country employs in the service of the military, however, is not that different. From Pakistan's millions, 643,800 people work as active military personnel, and a further 513,000 are available for combat as reserve military personnel. While India may have a billion-plus population, its number of active military personnel is thought to be around 1.4 million, and reserve personnel 1,155,000. This makes India the third largest active military in the world behind the United States and China, but Pakistan is not far behind in 6th place. India's military is also boosted by a huge paramilitary force of around 2 million people, tasked mostly with keeping peace and protecting the country's borders. Pakistan has around 400,000 paramilitaries, also working as border security and other jobs such as preventing smuggling. Not surprisingly, as the world's third largest GDP, India has more money to spend on its military. From India's $9.489 trillion GDP, around $55.9 billion is spent on its military. This budget is expected to rise significantly in the coming years as India rapidly upgrades its military. This puts India in the top 5 countries for military spending, equal to a handful of other countries that lag behind the big spenders of China and the USA. Pakistan has a relatively small defense budget at $7.6 billion, which is about 3.5% of its just over $1 trillion GDP. In terms of equipment, India has been investing a lot in its effort to improve its previously criticized aged military equipment.
Only this year did India invest $3 billion under its Field Artillery Rationalization Plan to buy 3,000 to 4,000 pieces of new artillery on top of बोला था ना acquiring मैंने, new इस साल ही tanks. हुआ है। In total, India currently has 4,426 tanks, 6,704 armored fighting vehicles, 290 self-propelled guns, 7,414 towed artillery, and 292 multiple launch rocket systems. In spite of Pakistan's relatively small budget, its land equipment numbers are fairly healthy, though the machinery itself is said to be not as advanced as that of India. The country has 2,924 tanks, 2,828 armored fighting vehicles, 465 self-propelled guns, 3,278 towed artillery, and 134 multiple launch rocket systems. Pakistan's most respected beast on land is probably its Al-Khalid main battle tank, what's been called the backbone of the Pakistan Army's armored corps. India arguably is developing a superior machine in the Arjun Mk2 third-generation battle tank. While land battles might be close, India almost certainly has the advantage in the air. Its mighty air force has about 1,720 aircraft and is the fourth largest in the world in terms of personnel and aircraft. Pakistan's air force has a respectable 961 aircraft, but in terms of technology, India is way out in front. India's fleet consists of Russian-made Sukhoi Su-30 MKIs and Mikoyan MiG-29s, and is further bolstered with one of the most advanced aircraft ever built, the French multi-role fighter Dassault Mirage 2000. While the Pakistani Air Force's motto is second to none, it's arguably second to the Indian Air Force, technologically speaking at least. Its pilots are highly respected. The Pakistani current fleet consists of 76 F-16 Fighting Falcons, 88 VPAC JF-17 Thunders, and some older models of the French Dassault Mirage. While these aircraft are still in use, they cannot be said to be anywhere near as advanced as some of the world's most modern aerial military technology. Pakistan is said to have the upper hand in one area though, and that's its attack helicopters. The country has 51 AH-1S Cobra attack helicopters, while 15 AH-1Z Vipers have been ordered. India is somewhat light regarding these machines, although just recently the country's Ministry of Defense approved the acquisition of 39 new attack helicopters. In the water, India is considered as having one of the most powerful navies in the world, and Pakistan could make no such claim. However, Pakistan is in the process of investing millions of dollars in modernizing its navy fleet while decommissioning ships that are somewhat out of date. The Indian Navy is also in the process of acquiring ships better suited to the possibility of future naval warfare. As of this year, the Indian Navy has an estimated 67,109 personnel, more than Pakistan's estimated 30+ thousand personnel. In terms of equipment, the Indian Navy has 1 aircraft carrier, 0 cruisers, 11 destroyers, 14 frigates, 15 submarines, 23 corvettes, 0 amphibious assault ships, 7 mine warfare ships, and 72 patrol ships. The Pakistani Navy has 0 aircraft carriers, 1 cruiser, 0 destroyers, 10 frigates, 8 submarines, 0 corvettes, 0 amphibious assault ships, 3 mine warfare ships, and 17 patrol ships. Both India and Pakistan make up the 9 countries with nuclear weapons, although the 2 countries have a small arsenal of these weapons compared to the USA and Russia, who own the vast majority of the world's most powerful bombs. It's said that Pakistan may have just a few more nuclear weapons than India, owning around 110 to 130 to India's 110 to 120. The Federation of American Scientists state that both countries' nuclear weapons are non-operational, meaning they are retired or waiting for dismantlement. Interestingly, the last time India and Pakistan conducted a test of nuclear weapons was the same year, 1998. One big threat to India, however, that has been a topic of discussion over the last few years is Pakistan's fast-growing stockpile of tactical nuclear weapons, or TNWs. Pakistan has been developing its Hatif 9 missile, which is equipped with a nuclear warhead. India has so far declined to develop its own TNWs, but it's unclear exactly what India's nuclear stockpile consists of. While India has a no-strike-first policy, it does have a massive retaliation policy if it should ever be attacked. In the event of a conflict, it's difficult to say who India and Pakistan's allies would be. This would depend on who launched the offensive and why. China and the US are the biggest arms suppliers to Pakistan, respectively, while Russia and the US are the biggest suppliers of arms to India, respectively. This, however, does not necessarily reflect an alliance in times of conflict. So, who do you think has a stronger military, India or Pakistan? Let us know why in the comments, and be sure to check out India versus the United States. Thanks. ओके, तो ये देखा वीडियो। जो लोग अभी मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं अभी भी, इट मीन्स वो मेरा देखना चाहते हैं रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहली बात, मैं एक बात आप लोग को बताता हूँ कि जो भी इसमें आंकड़े दिए गए हैं, है ना, कितना टैंक इंडिया के पास है, कितना टैंक उधर है, कितना गन इधर है, कितने, ये सारी चीज़ें जो मैं एक बात आपको बताऊं, तो
ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने निकाली होगी, ये वेबसाइट ये ऑनलाइन निकाली है गूगल से, ठीक है। तो जो एक बात है कि कहते हैं ना वो, हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो सेम ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पूरी तरह से सही नहीं होती, क्योंकि बहुत देश जो कंट्रीज होती हैं अपनी अपनी हर चीज़ तो नहीं इंटरनेट पे प्रोवाइड करेगी ना कि हमारे पास इतना है इतना है। ये होता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है जो दिखाने लायक होती है वो उतनी ही अमाउंट में वो दिखाई जाती है, अदरवाइज हर कंट्री अपना अपना चीज़ें छुपाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली तो। और जो दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, इंडिया में कंपेयर टू पाकिस्तान से बहुत कुछ बहुत मतलब ज़्यादा है, लेकिन एक बात ये भी है सोचने की, इंडिया के पास अगर वो चीज़ ज़्यादा है तो इंडिया का लैंड भी काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू पाकिस्तान। यहाँ की पॉपुलेशन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो पाकिस्तान के पास जितने भी अमाउंट में ये सब है असले हैं, आई थिंक वो उनके प्रोटेक्शन के लिए सफिशियंट है ना। ज़्यादा लेके क्या करना है हमको, अब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा है तो मेरे को बहुत बड़ी कंट्री है तो ऐसा थोड़ी कि उसके पास ज़्यादा है तो हमारे पास उसका डबल होना चाहिए। हमको सिर्फ इतने ही चाहिए कि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारा एरिया कम है तो हमें कम की ही ज़रूरत है, और अगर किसी का एरिया बड़ा है तो उसको ज़्यादा की ज़रूरत है ना। ये बात हो गई। तो इसमें किसी भी देश को डिग्रेड नहीं किया गया है ना। इसमें सप्लायर की बात की गई है, तो उसमें चाइना और यूएस को बताया गया है पाकिस्तान का सप्लायर। इंडिया में जैसे कि हम जानते हैं रशिया और अमेरिका, ये दो कंट्री हमारी सबसे बड़ी सप्लायर। और अभी इसराइल भी आ गई है। इसराइल से भी अभी मोदी जी वहाँ पे गए थे तो वहाँ से काफ़ी चीज़, बहुत सारे डिफेंस डील हुई है इंडिया की। पाकिस्तान का यूएस के साथ था पहले, लेकिन अभी यूएस के साथ थोड़ा उनका, जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से थोड़ा चल रहा है प्रॉब्लम। बाकी चाइना उनका अच्छा फ्रेंड है अभी, और वहाँ से काफ़ी उनको सपोर्ट और काफ़ी मतलब है। और ओवरऑल वीडियो में काफ़ी कुछ कंपैरिजन किया गया है ना। और अभी कुछ बहुत कुछ है कि इंडिया के जो जीडीपी और ये जो फोर्सेस पे जो खर्चा हो रहा है अभी इस साल काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि मैं बताऊं तो इंडिया का अभी जो मिलिट्री है उसके ऊपर 7th पे कमीशन लगा है ना। यानी वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया जो है ये सिर्फ ये गन वगैरह हथियार खरीदने में ही इतना बिलियंस ऑफ डॉलर ये यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 7th पे कमीशन लगा है क्योंकि हमारा ऐसा है कि हर 7 साल में जो सोल्जर की जो पेमेंट होती है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है। तो अभी इस साल 7th पे कमीशन लगा है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक हेड कांस्टेबल जो होते हैं है ना, यानी सिपाही, उसकी जो पेमेंट है लगभग 40,000 रुपये तक हो गई है बढ़ के, है ना। 40 से 45,000 तक हो गई है हेड कांस्टेबल की। तो मतलब सबकी उसमें आया है, कम से कम 15 से 20,000 तक का डिफरेंस आया, सबकी बढ़ी है। तो इसकी वजह से मिलिट्री का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है ना बजट। तो ये था। और पाकिस्तान में क्या है, क्या वहाँ पे किस तरह से 7th पे कमीशन ऐसा कुछ होता है 8th पे, तो वो मुझे कमेंट में बताइए। और प्लीज़ इसमें हेट वगैरह ना करिए, ये वीडियोस था नॉर्मल, इसमें कोई इतना सीरियस लेने वाली बात नहीं है ना। ये सारी चीज़ें तो हम ही क्रिएट करते हैं, गाली गलौच और ये सब सारी चीज़ें, जिसकी वजह से और भी कन्फ्लिक्शन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी वो मैटर नहीं करनी चाहिए, है ना। रिएक्शन देना था मुझे इस वीडियो पे, है ना, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो ट्रेलर वगैरह ही रिएक्ट करते हैं, और बाकी इस तरह की कोई वीडियो की डिमांड आती है तो वो लोग ऐसा सोचते हैं नहीं यार मेरे व्यूअर्स चले जाएंगे, सब्सक्राइबर चले जाएंगे अगर मैंने कुछ ऐसा बोला। ये अपने को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, ओपिनियन रियल देना है। और सामने जो ऑडियंस बैठी है, देखो मेरा तो एक ही मानना है कि सामने जो ऑडियंस बैठी है कभी भी उनको ऐसा नहीं समझना कि यार वो कुछ नादान है या फिर पागल, तो वो होता नहीं है, सिंपल सी बात है। सामने वाले लोग बैठे हैं वो भी इंटेलिजेंट है, उनका खुद का भी दिमाग है, वो भी समझदार है अपने लेवल पे, है ना। तो वो सारी बातें समझती हैं, है ना, और वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या है रियलिटी। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जो भी वीडियो आएगा मैं देखूंगा बिंदास, क्या क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्थी गाइस।